So अभी ऐसा प्रिपरेशन चल रहा है. You might be wondering what is going on. Hi guys, welcome back to my channel The Little Talk. It's a girl song right here. आप लोगों को पता चल गया है because of my background that I'm back at home. That means I'm at hometown. Two main reasons why I'm back at home from Calcutta. Firstly, my brother is back from UAE after 4 years. It's been quite long. मैं उनसे नहीं मिली हूँ, यानी कि पूरा फैमिली नहीं मिला है. The second main reason is हम लोगों का एक फेस्टिवल आया है, that is Losar, specially Buddhist community का, and it falls in the month of February. Starting तो एक्चुअली जनवरी से हो जाता है, बट शेरपा कम्युनिटी एंड टिबेटन कम्युनिटी वी सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जो कि है ऑन 21st, एंड आई एम एक्साइटेड. सो आज 28th of February है एंड द सेलिब्रेशन हैज़ काइंड ऑफ बिगन. We have started making khapse, which is one of the main item that we prepare for this celebration of Losar. I'm just going to show you how the preparation is going on. कैसे हो रहा है preparation, कैसे बनाया जा रहा है खप्से, मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी. Just stay with me till the end of the vlog. तो this is how we do it. यहाँ पे है पूरा dough with lots of colors, not lots of colors, but main color हम लोगों ने ऐड किया है ग्रीन एंड रेड, ऑलमोस्ट पिंक हो चुका है. एंड इस तरह से बेल के इसको कटिंग किया जाता है. उसके बाद हम लोग ये डिज़ाइन बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड खापसे. होल्ड ऑन, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स. बहुत सारे लोगों के पास दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या है ये लोसर, क्या बनाया जा रहा है इसके व्लॉग में. तो लेट मी क्लियर इट. लोसर इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इज अ टिबेटन न्यू ईयर. बट आप लोगों के मन में अगेन ये क्वेश्चन होगा कि ये यहाँ इंडिया में रह के ये टिबेटन कल्चर क्यों फॉलो कर रही है. टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम बुद्धिस्ट एंड ये वाला फेस्टिवल पूरी तरह से पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे और जो लोग बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग मानते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी. But it is celebrated as on the first day of the first month of the Tibetan lunar calendar, which happens to be ये month का 21st 2023 में. सो इन मेनली 3 days होता है. पहले के ज़माने में एंशियंट डेज में इट यूज टू बी सेलिब्रेटेड इन अ वास्ट रिचुअलिस्टिक मैनर, जहाँ पे दे यूज टू हैव लॉट्स ऑफ मेरी मेकिंग एंड डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग. बट अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड इवॉल्वमेंट, different era, modern days, and change of communities and leaders, it has been changing, evolving in different ways. तो अभी फ़िलहाल क्या होते हैं, नॉर्मल वे में हम लोग अपने फैमिली के साथ रह के for 3 days we sees different kind of merry making. We have lots of different Tibetan delicacies that we celebrate, that we enjoy. Two of the major factor or the item which we ritualistic follow and enjoy is this one, the khapse, which we are making right now, जो हम लोग बना रहे हैं अभी. और second है chhang, which is Tibetan barley beer. एक अल्कोहल होता है जो फैमिली के साथ पूरी तरह से नॉर्मल वे में लिमिटेड वे में बट पिया जाता है, एंड इसी तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं. वी सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर एल्डर्स. वी वेयर अ ट्रेडिशनल ड्रेस दैट इज बक्खू और छुपा, whatever you can say, and different reason में different नाम दिया जाता है different चीज़ का. So that's how we celebrate. ये सब डिज़ाइन बनाया है मैंने और भाई ने मिलके, and I'm also gonna show you after it is being cooked. बाकी साकेरम दिखाऊंगी, but this is just the design. सो ये रहा रिप्रेजेंटेशन और छोटा सा मॉडल ऑफ द वाटर रैबिट. अकॉर्डिंग टू द टिबेटन कैलेंडर एवरी ईयर एक सर्कुलर मोशन में 12 एनिमल्स आते हैं एवरी न्यू ईयर. बेसिकली हमारे यहाँ तो अभी चल रहा है 2023, बट टिबेटन कैलेंडर का हो गया है 2150 ईयर्स. सो दिस ईयर का एनिमल है वाटर रैबिट. एंड खब्ज़ बनाने से पहले हम लोग को ये एनिमल थोड़ा सा मॉडल टाइप का बनाया जाता है आटे से, और इसको पहले
पकाया जाता है और इसको दरवाजे में कहीं लगाया जाता है, which kind of is a representation of seeking nourishing power, the blessings towards the family, towards the neighborhood of the new year, and removing all the obstacles and negative baggages from the past karmas. This is how we cherish the beginning of the celebration of Losar. एंड इसको बोलते हैं आमचू या फिर शेरोक. इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, community. This is actually one of the most important कब्ज़ी दैट वी हम लोग जो भगवान को चढ़ाते हैं ये गैलबू लोसर में, ठीक है. सो इट हैज़ टू बी देयर अपार्ट फ्रॉम वो ये सब चीज़. ये सब तो अभी कच्चा है. दिस हैज़ टू बी कुक्ड इन ऑयल एंड इट्स गेटिंग हीटेड अप. वो भी मैं पका के दिखाती हूँ. आज का यही है मेन अट्रैक्शन. तो अब बस बचा है दिस मच. वी गोना फ्राई दिस हियर and there's the end product. कल मैं दिखाऊंगी ये सब कुछ सजा के मंदिर में. Bonus. Hi guys, welcome back to my little